पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीर प्रणित चलाता चक्षाणौ चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्जत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानाम्बासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रसैव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभा कुचतटे वृषं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारोगविजये जगत्रातुं शम्भो जयति करुणा काचितरुणा कलङ्ककस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयो कलाभिर्कर्पूरै मरकदकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रेतकुहरौ विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्त पुरमसि ततः त्वच्चरणयो सपर्या मर्यादा तरलकरणानाम् असुलभा तथा येते नीता शतमकमुखासेदिमतुलां तव द्वारोपान्त स्थितिभिरणिमाध्याभिरमरा कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनाम् अचरमे कुचाभ्यामासङ्ग कुरभगतरोरप्यसुलभ गिरामाहो देवीं द्रुहिणगृहिणीम् आगमविदो हरे पत्नीं पद्मां हरसचरीं आद्रितनया तुरीयकपित्वं दुरधिगमनीसीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कथय कलिलालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णे जनजलं प्रकृत्यामूक नामपि च कविताकारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूल रसता सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव
कपितपशुपाश व्यतिकरः परानन्दाभीक्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधि सुधासूतेन्द्रोपल जललवैराग्यरचना स्वकीयम्बोभिः जलनिधिसौगीत्यकरणौ त्वदीयाभिर्वाग्भिर्तव जननि वाचां सुतिरियो सौन्दर्यलहरी मुख्यस्तोत्रं सर्वार्थदायकौ भगवत्पादसङ्कृतौ पठन्मुक्तो भवेत् नरः।